Now let us try to understand about brain and coverings of brain. इसके ऊपर ये इतने सेक्शन के ऊपर कम से कम 20 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो सकते हैं रिगार्डिंग कवरिंग्स ऑफ ब्रेन. तो ध्यान में रखो, ह्यूमन ब्रेन इज द एंटेरियर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ C.N.S. Brain is located in the cranium or brain box. Human brain has a weight about 1.3 to 1.5, actually 1.3 kg. Human brain is covered by, हर vital organs के अपने अपने coverings होते हैं. वैसे human brain is covered by 3 membranous coverings. ऊपर वाली रेड कलर दिख रहा है, बीच में ग्रीन कलर की कवरिंग दिख रही है और ब्रेन के सबसे नजदीक ये ब्लू कलर से मैंने स्केच किया है ये 3 कवरिंग्स. और तीनों को मिलकर कहा जाता है मेनिंक्स और मेनिंजस. 3 in 1. जैसे हार्ट में आपने पढ़ा है ना, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. वैसे यहां पे ब्रेन के 3 कवरिंग्स है. द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग्स कॉल्ड एज मेनिंजस. तीनों को मिलकर बोलेंगे मेनिंजस. अब मेनिंजस में 3 लेयर है. सबसे बाहर ये जो रेड कलर से मैंने स्केच किया है, दिस इज द आउटर मोस्ट थिक फाइब्रस connective tissue covering which is non-vascular that lie very close to the cranium or brain box. So here, just a minute. Right. So here, these coverings, meninges, the outermost tough, thick, fibrous connective tissue covering, सबसे बाहर जो है रेड कलर की दिख रही है, called as dura mater. Outermost fibrous tough connective tissue covering on the brain is called dura mater. It is also called hard mother. Dura mater is non-vascular layer, thick fibrous covering, and dura mater is protective in function. This covering is protective in function. Dura mater के बीच में, मतलब सेकंड लेयर है नीचे, arachnoid matter. Middle membranous covering is called arachnoid matter. This is thin. The middle membranous covering is called arachnoid matter. It is also non-vascular. And the innermost thin covering layer which is highly vascular and lie very close to brain is called pia mater. तो 3 meninges है, dura mater, arachnoid matter, pia mater. Outer hard tough covering is called dura mater. It is non-vascular layer. It is protective in function. Middle membranous covering is called arachnoid matter. Arachnoid matter appear like a web. बहुत ऐसे थिन नेटवर्क जाली जैसे होते हैं, जाली के जैसे दिखता है arachnoid matter. That's why it is called spider's web. Spider's web. So arachnoid matter is also called spider's web. And innermost highly vascular covering layer that lie very close to brain is called pia mater. Pia mater is also called soft mother. Soft mother, hard mother, spider's web and soft mother. अब बीच बीच में स्पेस दिखता है, स्पेस देखिए, ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में ये स्पेस दिख रहा है जहां पे मैं अभी डॉट्स दे रहा हूं. दिस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस. Subdural space. The space present in between dura mater and arachnoid matter, मतलब below the dura matter is called subdural space, and subdural space is filled with a fluid called as serous fluid. यहाँ पे एक fluid होता है that is called serous fluid.
Right now, arachnoid matter. Second layer is arachnoid matter. Arachnoid matter is thin membranous covering. It appears like a spider's web. That's why also called spider's web. And this is also non-vascular covering. It is protective and nutritive in function. Arachnoid matter के नीचे और space है. And this is called subarachnoid space. Subarachnoid space के अंदर बहुत ज्यादा fluid है. And this is called cerebrospinal fluid, C.S.F. Right? So arachnoid matter के नीचे वाला space is called subarachnoid space. And subarachnoid space is filled with the fluid called C.S.F, cerebrospinal fluid. और सब में लास्ट लेयर है, that is called pia matter. Pia matter is nutritive in function. So these meninges and fluid, cerebrospinal fluid, togetherly plays an important role in providing nutrients to the brain, protection and support, and also for protecting the brain. Pia matter is very soft membrane. That's why it is also called soft mother. And pia matter is nutritive in function. ये जो pia matter है इसका मेन पर्पस होता है न्यूट्रिशन. अब दोनों के बीच में का स्पेस, मतलब ये तीन मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस और फ्लूइड, as you know, the space between dura matter and arachnoid matter is called subdural space, and subdural space is filled with serous fluid, not CSF. क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों सीईटी में. The subdural space is filled with a fluid called as serous fluid, CSF नहीं. Now, the space between arachnoid matter and pia matter is called subarachnoid space, and subarachnoid space is filled with CSF, cerebrospinal fluid. CSF जो है ना, ये पूरा इंटायर नर्वस सिस्टम में होता है, मतलब ब्रेन के बाहर पूरा कवरिंग्स में, ब्रेन के अंदर की कैविटीज में और स्पाइनल कॉर्ड के पूरा कैविटीज में. All these covering, three coverings are also around the spinal cord. Spinal cord के बाहर से भी ये तीनों coverings है. So spinal cord is also surrounded by these three membranous coverings such as dura matter, arachnoid matter and pia matter. Spinal cord के बाहर से भी जो coverings है उसके भी बीच में space है, that is subdural space and subarachnoid space, and overall subarachnoid space is filled with a fluid called as CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid work like a lymph के जैसा यहाँ पे काम करता है. Total volume of CSF is about 100 to 120 cc. 100 to 120 cc इतना CSF होता है. CSF बनता कहां से है? पिया मैटर की जो मेम्ब्रेन है वो भी CSF सिक्रेट करती है. The innermost membrane pia matter also secretes the cerebrospinal fluid. दूसरा, जब हम ब्रेन के अंदर जाएंगे और अंदर पूरा वर्टिकल सेक्शन में पार्ट पढ़ेंगे तो ब्रेन के फ्रंटल साइड और बैक साइड में ऐसे नेटवर्क होता है. That network of particular vessels is known as plexus, known as anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. वो choroid plexus में से भी ऐसे टिप 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 ऐसे cerebrospinal fluid रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है. प्लस ब्रेन के अंदर कैविटीज है कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटी है कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल. वहां पे लाइनिंग में कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एज एपेंडाइमा सेल्स. ये आपने ग्लियल सेल्स में भी पढ़ा है. So ependyma cells present in the linings of ventricles and also in the linings of spinal cord also plays an important role in forming or producing cerebrospinal fluid. यहाँ से बनता है CSF. Cerebrospinal fluid act as a shock absorber. It act as shock absorber. मतलब ब्रेन को कितना भी jerks हुए, कितना भी vibrations हुआ, तो ये CSF it absorb all these vibrations and act as shock absorber.
Cerebrospinal fluid also provide nutrients and oxygen to the brain. पूरा ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये भी सीएसएफ का मेन फंक्शन है. CSF also act as a lubricant. ये ब्रेन के आजू बाजू से बाहर से लुब्रिकेंट का भी काम करता है. So protection, lubrication, providing nutrients, providing oxygen to the brain, and it prevent डेसिकेशन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज ना होने देना, उसका डेसिकेशन अवॉइड करना, ये भी सीएसएफ का मेन फंक्शन है. सो cerebrospinal fluid also plays an important role in protecting or preventing the desiccation of the brain. Next part, cerebrospinal fluid can be obtained by lumbar puncture. लंबार पंक्चर के जरिए ये सीएसएफ बाहर भी निकाल सकते हैं. CSF is also, actually it is drained inside the brain, in the coverings of brain also, and it can also get diffused into bloods. blood में भी ये बाद में जो भी CSF है वो diffuse हो जाता है. So this is everything about different parts of nervous system and about coverings of brain.